Namaste and welcome to Nuvoco presents Ghar Banao Apna, the News 18 initiative. मेरा नाम आनंद नरसिम्हन है और इस सीरीज में हम बात करेंगे खुद के घर की, जिसका सपना हर आम और खास दिखता है। तो घर बनाने में कितना खर्चा आएगा, लेआउट कैसा बनता है, परमिशंस कैसे ली जाती हैं, कौन सी क्वालिटी का मटेरियल यूज करें, हाउ मच लोन कैन वी गेट, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट आर द गवर्नमेंट स्कीम्स दैट कैन हेल्प अस अचीविंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स ऑफ आवर लाइफ। इन सब पर बात करने के लिए नाउ वी हैव अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स एंड लेट मी इंट्रोड्यूस आवर एक्सट्रीम गेस्ट्स टू ऑल आवर व्यूअर्स. I have with me JB Singh, leading architect based out of Gurugram, Pankaj Bansal, Chief Business Officer, bankbazaar.com, Sudhir Krishnan, former Secretary, Urban Development Ministry, Government of India, and Chirag Shah is the Head of Marketing, Nuvoco. तो आप सबको नमस्ते. Thank you very much for this very, very enterprising, very engaging, and perhaps I'm also looking forward to learn something कि अपना घर बनाने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए and what are the advantages that I can take. So let's ask our friend from Bank Bazaar, what is a good time and when should you look at and what are the trends to read to say okay this is the right time to go in for a home loan, और फिर ये home loan plus loan to purchase a plot or loan to construct a house, are these different? लोन होम लोन में और प्लॉट में कि होम लोन एक रेडी पोजीशन वाली चीज है, मतलब आपके पास ऑलरेडी एक घर है, आइडेंटिफाइड है, प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड है, जो बना बनाया है, जिसमें आप जाके या तो आप इन्वेस्टमेंट की तरह रह सकते हैं या आप उसमें रह सकते हैं, तो वो आपको होम लोन मिल जाता है. और होम लोन नॉर्मली आज की डेट में इंडिया में 80% ऑफ योर लोन टू वैल्यू पे आराम से होम लोन मिल जाता है. अगर आप प्लॉट का लोन भी ले रहे हैं तो आज की डेट में नॉर्मल 7-7.5% बीच में विद द न्यू रेपो रेट चेंजेस SBI में अगर आप जाएंगे तो अभी 7.5 के बीच में आपको मिल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन योर क्रेडिट स्कोर, आपका प्रोफाइल, वो सब देखते हुए. But broadly, this is a range. Construction also, as I mentioned, I think this is the third phase of a plot. So you have identified a land, आपके पास ऑलरेडी एक लैंड है, उसके ऊपर आपको कंस्ट्रक्शन करना है, तो कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट में भी आपको लोन मिल जाता है. वो लोन आपको ऑब्वियसली देयर विल बी सम आर्टिकेट सर्टिफिकेट्स, सम पेपर वर्क दैट यू हैव टू डू, एंड देन अगेन 80% तक का आपको लोन नॉर्मली easily अवेल हो जाता है आज की डेट में विद द मार्केट. सो कंस्ट्रक्शन लोन इज आल्सो वेरी प्रोमिनेंट सेगमेंट. But coming back to Chirag ji, there was a time when they said, why are we in the infrastructure business? Now is a time when when everyone in India is saying, let's get into the infrastructure business. And one of the biggest aspects of that is housing, and building materials become integral to that. So thank you for partnering with us. But why this endeavor? Why do you want to do this series? So, as India's leading building materials company, we think it's our responsibility not only to educate people about the nuances of building the dream home with quality products and site safety practices, but also facilitate and help them through this journey of building the dream home. So, अगर Nuvoco की बात करें तो सीमेंट के क्षेत्र में, कंक्रीट के क्षेत्र में, मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल के क्षेत्र में काफी वर्षों से एक विख्यात नाम है. अपने इनोवेटिव और उत्कृष्ट उत्पादों की वजह से जाना जाता है और इंडस्ट्री में एक नया मुकाम भी बना रही है. बट अगर हम हाउसिंग की बात करें या अपने घर बनाने की बात करें तो ये एक सपना है जो हम सबका रहता है. The realization of this dream definitely gives us immense joy, pride and a sense of achievement somewhere. तो सामान्यतः अपने घर का निर्माण करने का अनुभव हमारे जीवन काल में एक ही बार आता है. And we believe that this is the app platform through which we can engage with the viewers and give them a holistic perspective and a view with correct information about every aspect that goes into building of a home, and in turn help them or empower them to make an informed decision on all the critical factors. Sudhir ji, I wanted to know, in this EWS category, the government has a very interesting scheme. They are ready to give up to 70% subsidy or financing. How does that work? Well, on financing, interest is subsidized. That interest subsidy is as much as 6.5% subsidy, which is, you get a loan at about 8% or even EWS gets. So it's almost free loan, but up to 6 lakh of loan, as I said before. Yeah. And for the higher category, say for the LIG category, that also it will be 6.5% interest subsidy rate. But for MIG, it will be 4% for MIG 1, that is 12 lakh rupee income per year. And above 12 lakh up to 18 lakh rupee per annum family income becomes MIG 2, where interest subsidy rate will be 3%. But the total amount will remain eligible, will be like 18 lakh rupees of loan
up to 18 lakh rupee loan for MIG2 category, up to 12 lakh rupee loan for MIG1 category, up to 6 lakh rupee loan for LIG category, and up to 3 lakh loan for the EWS category. So that is how it is at the almost, if somebody puts his own seed capital from personal side, so the huge interest subsidy comes for the weaker section of the population. But more or less, going by the number, almost a good part of the population which required houses, as far as number goes, has been saturated, has been provided, and some are under construction in different stages, and many have been constructed. Chirag ji, let me ask you this, that when people buy construction material, आपके साथ का तो आपका तो focus वहीं पर है कि building material पे आपका वहाँ पर NUWOCO comes into play. What are the important things that one should keep in mind? क्या geographical location बहुत मायने रखता है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर मैं दिल्ली में घर बना रहा हूँ या दिल्ली से आगे निकल के नोएडा में घर बना रहा हूँ या फिर सॉइल क्वालिटी उसका फ़र्क पड़ता है, टेरेन का फ़र्क पड़ता है, कहाँ क्या-क्या considerations करने पड़ते हैं? Building materials that we take defines the overall durability, endurance and character of the building. So while cost and quality are important, basis which the right product should be selected, it is also important, like you said, to keep in mind a lot of other things, like the lifespan or the utility of the product, उस प्रोडक्ट का सर्टिफिकेशन, उसकी एस्थेटिक्स, कितना मेंटेनेंस आएगा उस प्रोडक्ट को रखने में आगे, क्लाइमेटिक कंडीशंस, टोपोग्राफिक कंडीशंस एंड जियोग्राफिक कंडीशंस, इन सब का भी ध्यान रखना पड़ता है चयन करते वक्त, सो दैट वंस यू सिलेक्ट द राइट सेट ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच आर अ करेक्ट फिट इन ऑर्डर टू बिल्ड दैट परफेक्ट होम. ये बहुत जरूरी होता है. So JB, I wanted to ask you, what are the major things that one has to consider while building a house? And सबसे पहले कि मटेरियल किस तरह का यूज़ करना है, कैसे उसकी बजटिंग करूं, कहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूं और किन चीज़ों पे मुझे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए? सबसे पहले जब भी आप एक घर बनाने की बात करते हो ना, तो बहुत ज़रूरी है आपकी बिल्डिंग का जो मैप होना चाहिए वो वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए. प्लानिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि द एरिया शुड बी वेल कनेक्टेड एंड एवरीथिंग हैज टू बी विद द हार्मनी. मतलब कुछ भी पोर्शन में कटा हुआ नहीं लगना चाहिए. इट शुड बी वेल कनेक्टेड, वेदर इट्स योर लिविंग, इट्स योर किचन, इट्स योर डाइनिंग, वॉशरूम्स, व्हाटएवर, बैल्कनीज, फ्रंट वरांडा, टेरेस गार्डन्स, जो भी आप बनाना चाहें. सेकेंडली, जो चीज मटेरियल की अगर हम बात करते हैं, जैसे आई मेंशन कि हम हमेशा बिल्डिंग को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. Based on the type of building, shape of the building, and the design of the building, structure एक ऐसी चीज होती है which is a non-compromisable stuff, जिसके अंदर we talk about the good materials in the RMC forms, steel forms, bricks and everything. मैं ये मानता हूँ कि since the banks are here, the government is supporting, architect fraternity is there, engineer fraternity is there, now the awareness is also spreading the people. So बेस्ट ये होता है कि अगर कोई आदमी इनिशियली अपने प्लान्स को, अपने एरियाज को, अपने बजट को स्ट्रीमलाइन कर ले, एंड ही कैन टेक द सपोर्ट फ्रॉम द बैंक. Right. Let me ask you, Chirag ji, is there a ready reckoner to say how much of what building material I should buy? And I'm asking you this because I know this personally. I had an anecdote. A friend of mine was wanting to add another floor to his house, and just generations things, so he wanted to add. So he got a quote from 3 contractors. So each one of them gave certain standard requirement for material, but a lot of it, the quotes were different. The quantities that were required. In fact, in certain cases, bags of cement were also varying. So he was wondering who's right. So then he consulted his dad, and his dad gave him another list, saying, मैंने 2 घर बनाए बेटा, मुझे पता है exactly कितना कहाँ पे चाहिए, तो इसको use करो. But हर किसी के पास तो ये नहीं है expertise. So how do I get to understand which kind of building material do I use and how much? So अगर हम साइट मिक्स और रेडी मिक्स कंक्रीट की बात करें, तो सीमेंट की जो मात्रा है वो कंक्रीट के ग्रेड के अनुसार निर्धारित होती है. उसमें मिक्स प्रपोर्शन भी बहुत एक अहम भूमिका निभाती है, जिसके अनुसार क्वांटिटी एस्टिमेशन को की जा सकती है. तो चूंकि उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स रहते हैं, तो निर्माण सामग्री की क्वांटिटी से जुड़ी सारी जानकारी और आसान कैलकुलेशन आप न्यूवोको की वेबसाइट newocohomeassist.com पर भी पा सकते हैं. इसके अलावा वी ऑल्सो हैव अ प्रोफेशनल business development and technical team across all our operating states. So this team works closely with home builders, engineers, architects, contractors and masons to provide them technical know-how, quantity estimation, technical support for building and guidance,
product demonstration, and slab supervision services as well. So this team is only a phone call away. So any kind of a help that a home builder may require, it is always easily available for them. Well, we need to populate this information a little more so that more people are aware. Gentlemen, it's been a great conversation. Well, after all that we've learned today, one thing is clear, building a house might be a task, but at the end of it, it just becomes a celebration. घर सिर्फ मकान नहीं होता, उसमें सपने पलते हैं जो भविष्य को उज्जवल करते हैं और सब यही कहते हैं कि घर आज आप कहाँ पर हैं उसको देखकर मत बनाइए, आप कल अपने आप को कहाँ देखते हैं उस हिसाब से बनाइए. And there you'll always see you grow, yourself grow. So that's how you need to get into it. Thank you all for being a part of this very, very special presentation of Nuvoco presents Ghar Banao Apna, a News 18 initiative. Thank you very, very much.